नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पे, और मैं बता दूं यहाँ हम इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ के जो आरजीयू टीचर्स एसोसिएशन है उनके तरफ से जो अथॉरिटी है वीसी और कह सकते हैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को बारंबार उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रखा जा रहा था, ताकि कुछ डिमांड उनकी तरफ से रखा गया था। उसके बाद उसको लेकर तो हम यहाँ इसीलिए आए कि ताकि हम जो मेंबर्स हैं उनसे पता लगा पाए कि जो उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रखा जा रहा था उसको लेकर कुछ अथॉरिटी की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया है कि नहीं। तो चलिए देखिए हमारा रिपोर्ट। There is some long pending demands of Rajiv Gandhi University Teachers Associations. We have many times we have submitted the representations to the authority also, and they are also relying and they are assuring us that they will look into it. But after so many repetitions and so many requests, many of the demands is not yet fulfilled by them. So that's why in order to for the fulfillments of this demand, we are starting a democratic moments from today onwards, so that the authority will listen to us and the authority will fulfill our demands. So when we talk about demands, the demands are like this. Earlier there were 5-point demands. So out of the demands, 2 demands has been fulfilled by them. So 3 were left. So those 3 which were left are considerations of leave issue. Some faculty members stranded outside of the campus during the COVID-19 pandemic. So they could not come back to the campus because of the lockdown, and the authority is forcing them to apply leave against that absent periods. So we are demanding that the authority should condone it, consider that absent period as on duty, because that our colleagues they might be in their villages, they might be in their places out of the campus. They did their duty online, so that's why the authorities should consider that as a consider those authority on duty. Then the second was regarding block of the increments. So every year during July, so faculty members or other staff, we have increments to our salary, but that is not given to many of our colleagues. So that's why we are demanding that unconditionally those withheld increments should be released by the authority. And the third pending demand is that recently in June 4, they have issued a circular that those papers or articles published in UGC CARE list journal only will be considered for calculation of academic score for promotion as well as for new recruitments. So we are the teachers community are totally against it, because there is one regulation by the University Grant Commission New Delhi, which is something like Quran or Bible for us. We are following this, and all the university are following this. So that 2018 UGC gazetted notification. So according to that, those papers published in peer-reviewed journals and others journals like UGC CARE listed journal or UGC all approved journals, they will also be considered for calculation of or computation of the academic score. It was clearly mentioned in Regulation 2018. But one public notice come out in 19 September 2019. So in that notice, the UGC were guiding
not exactly, I mean, specifically telling to the university or any particular institute, but they, in a general, they are uh, encouraging the academic community to publish paper in uh, academic, UGC CARE listed journal. But there also it was not specifically or mentioned that those papers published in peer-reviewed journals should not be considered for computation of academic score. In that also it is not mentioned like that. Mm. So that was anyway, that was a public notice, which is normally, if we see it legally, it is advisory in nature, not exactly orders. So there it is written that the UGC all approved journal is replaced by UGC care list journals. So it was clearly mentioned there like that. That's why UGC care list, those journals which are in UGC care list should be considered. I mean, those papers which are published in UGC care list should be considered for academic, uh, maybe consider for this academic scholar. But there it is not mentioned that those papers published in peer-reviewed journals should not be considered. So this is just simply a guide that all list is replaced by new list. Then in the second last paragraph or second paragraph, it is again there is a let me say advice that head of the institution, whether he or she may be director, vice chancellor, or board members, they should ensure that the mere publications of papers in peer-reviewed journal as well as UGC all approved journals should not be criteria. You have to check the quality of the papers, mere present. But there also it is not denied that those papers published in those papers published in peer-reviewed journals should not be considered. So there is no such thing there also. So that's why we don't understand that why this thing is forcing upon the teacher community. That's why we have written to the authority that this should not be implemented in Rajiv Gandhi University. The authority, in reply, they assure that we are looking into it, but so much time has passed. But in concrete, in black and white, they are not doing anything, and they are not scraping the earlier circular which was uh, issued by them. That's why on 31st August we had a GBM. So many uh, many of our colleagues have been affected. So because of that, we call a GBM that this is the situation and this is the circumstances. So in these circumstances or situations, uh, what we should do or how we should negotiate with the Rajiv Gandhi University authority. That's why in that GBM, it was unanimously adopted that we have adopted one resolution unanimously that we will demand to the uh, Rajiv Gandhi University that this circular should be, which has issues, should be withdraw and it should be scrapped. So earlier, what 2018 regulation is there, that should be implemented in Rajiv Gandhi University in toto for new recruitment as well as for case promotions. That was our demand, and if they don't do that, we will start democratic movement from 2nd of September, that is today, by wearing black badge as a mark of or as a mark of protest or to show the protest silently, so in a very democratic way. So that we are doing today, and after that also, if after that also university does not hit to our uh, demands, then maybe in on
we have decided that on 5th of September we'll stage a peaceful dharna near administrative building of Rajiv Gandhi University Authority. Then after that also, if they don't fulfill our demands, then we will continue our moments. So that is our standing for the moments. So thank you very much. आपने ब्रीफ तो कर दिया, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में आप लोग का 5 पॉइंट मेमोरेंडम है, जिसमें से 2 को फुलफिल किया गया ऑपरेटिव की तरफ से करा है। तो सर, जो 3 रिमेनिंग है जिसको लेकर आप लोग ने रिसेंटली भी आपने मेमोरेंडम सबमिट किया ऑपरेटिव को, तो उनके तरफ से कुछ अपडेट या फिर उनके तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि क्यों ये जो 3 रिमेनिंग पॉइंट्स को जो डिमांड आपने रखा है उसको फुलफिल नहीं किया जाए, कुछ क्लेरिफिकेशन ऑपरेटिव तरफ से दिया गया था? So from the 5 demands which we have submitted or placed to the Rajiv Gandhi University Authority, so 2 demands like continuous grant of 5 days scheduled leaves. So the rule here is that we can take up to 5 days according to DoPT rules also. Then whatever it is there in the Swami book also. So then we have approached them. They fulfill this demand. That is one demand which has been fulfilled. So the another one was some of our colleagues who are here. They sometimes get some opportunity outside, so they apply outside, and sometimes even yeah, I'm telling you that those 2 demands I'm telling has been fulfilled first. So they apply outside, but NOC was not given to them. But we tell them NOC should be given to those colleagues. So their opportunities should not be curtailed. So that demand is also fulfilled. Now the 3 demand left, that is the regularizations of COVID absent periods, then this issue of UGC peer reviewed and UGC careless issue, then this block of the increments. So in this case also we have submitted 2-3 representations to the authority, but the authority is saying that the file is under process and administrative procedure take times, and they are saying like that, but they are not giving us concrete reply that we are fulfilling your demands. So they are just delaying the things, and we are running out of patience, and we have waited enough. So that's why out of compulsions, and we did not find any way and any options. That's why we are telling our grievances to the authority by this peaceful moment. मैम, जो डिमांड रखा जा रहा है आरजीयू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से, एज अ प्रोफेशन आपकी तरफ से क्या कहना होगा? आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? डिमांड को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। और जो लीव का इशू आया है, इंक्रीमेंट का इशू सब जो आया है, वो काफ़ी दिनों से, कोविड के दिनों से है, क्योंकि कोविड में जो लीव में चले गए थे उनका लीव अभी तक रेगुलराइज नहीं हुआ है, जबकि डीओपीटी का ऑलरेडी ऑर्डर है कि उनको कोविड के हिसाब से ग्रेस दे देना चाहिए। सो वो नहीं हुआ, तो वो जब हम फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं तब से ये डिमांड है, तो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ वो। तो बाकी जितने डिमांड है अभी के रिसेंट डिमांड भी, ये सब बहुत ही जायज़ है अभी देखा जाए तो, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूनिवर्सिटी है, टीचर, स्टूडेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, उसका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से होता है। तो अगर एक पार्ट भी, इफ़ वन पार्ट इज़ डिससेटिस्फाइड, तो यूनिवर्सिटी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो टीचर अगर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे तो ऑब्वियसली टीचर अपना फुल जो अपना मतलब फुल पोटेंशियल है जो यूनिवर्सिटी को देना है, जो बच्चों को देना है, वो नहीं रहेगा, और बहुत सारे लोगों को ये मेंटली भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए अभी तक मतलब जो भी डिमांड है वो बहुत ही जायज़ है। थैंक यू टू द मीडिया। एंड एक्चुअली ऐसा है, यूनिवर्सिटी ने 25 फरवरी 2022 का एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसमें क्लियरली लिखा था कि एकेडमिक स्कोर जितने हैं तो वो सारे
यूजीसी 2018 रेगुलेशंस एंड फॉलोइंग अमेंडमेंट के साथ में ही होगा बोल के इस तरह से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी 3 जून को ग्रुप ऑफ डीन्स बैठ के एक सर्कुलर निकाला जिसमें बोला है कि ऑन द इश्यू ऑफ पब्लिकेशन केवल यूजीसी केयर पब्लिकेशन वाला जर्नल्स को ही अलाउ किया जाएगा बोला, जो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट में जिस तरह से 2018 रेगुलेशन का मेंशन किया था उसका अगेंस्ट है एंड इट इज़ एक्चुअली इलीगल ऑल्सो। और ग्रुप ऑफ डीन्स लोग इस तरह का पॉलिसी डिसीजन स्पेशली रिलेटिंग टू रिक्रूटिंग मैटर्स नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी है तो इसे एक यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव कमिटी बॉडी का लेवल में इसको वेटिंग करना चाहिए, उसके बाद में जाके यूनिवर्सिटी इसके ऊपर अगर डिसीजन भी लेना है तो ये जो डिसीजन इस एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फ्यूचर के लिए वो लोग कर सकते हैं। शायद ये यूनिवर्सिटी के तरफ से भी चूक है, उनका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा होगा। तो आरजीयूता का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम से, तो हम लोग अथॉरिटी को ये समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपका इंटरप्रिटेशन गलती है और आपका एडवर्टाइजमेंट का ऊपर जो जिस तरह से 2018 रेगुलेशन यूजीसी का तरह से जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसी पर ही आप डिपेंड करके आप चलना चाहिए आगे। और इंटरव्यू में लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकेशन इन यूजीसी केयर का नाम से जो आउट किया जा रहा है उनको बुलाया जाना चाहिए और इंटरव्यू करना चाहिए। तो ये एक मेन डिमांड हमारा है और इसके साथ में और काफ़ी सारे अलग डिमांड्स भी हैं। तो सर आप सपोर्ट करते हैं डिमांड? हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ जिसमें मेरा यहाँ पे 11-12 साल हो गया है एंड हमारा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी में केवल हम लोग 4 टीचर हैं, हम लोग 4 प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो 4 टीचर से इतना सारा प्रोग्राम भी चलाना मुश्किल है। तो हमारे यहाँ पे अगर हम लोग प्रमोटेड होते हैं तो और 2-3 पोस्ट खाली हो जाएंगे, तो इस तरह से डिपार्टमेंट भी ग्रो होगा और टीचर्स का संख्या भी बढ़ेंगे और हम लोग अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे। तो यही हमारा गुहार है कि हम लोगों को जिस बेसिस में यूजीसी केयर जर्नल के नाम से जो इनएलिजिबल कराया जा रहा है, जो वो एक एडवर्टाइजमेंट का बेस मुताबिक ये गलत है, इलीगल है और इसे यूनिवर्सिटी वापस लेना चाहिए डिसीजन को और हमें इंटरव्यू में बुलाने का इन्विटेशन मिलना चाहिए। I stand by all the demands that has been put up by the RGUTA, and this is a long-standing pending demands, and it's a very genuine, and many of these are of such a nature that if it is not settled properly, is going to affect the teachers, the academic community as a whole of the university, and especially with respect to the consideration of the peer review journal, as the UGC regulation 2018 is very clear, and our university's recruitment advertisement has also had also indicated that the UGC regulation 2018 will be followed in toto. So I think when it comes to university system, the rules laid down by UGC and the ordinance of the university becomes paramount, and any university cannot violate these provisions. So, and second point that I want to flag here is regarding the probation issue. Like there are many teachers who joined last year, and they have completed their probation period of 1 year, but the university have not confirmed their services even after the completion of 1 year, and which is in violation of the ordinance of the university. So most of us are very much disappointed, and through RGUTA, we have been trying to talk to the authority and get a favorable solution to all our demands. But I think the authority is kind of adopting a delay tactic. So as a last resort, we are all coming out in support of this democratic movement, and
we are willing to fight for the cause and larger interest of the teachers and university in general. जैसे आप सबने सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से 5 पॉइंट डिमांड्स रखा गया था, आउट ऑफ विच सिर्फ 2 पॉइंट्स को अथॉरिटी की तरफ से जो फुलफिल किया गया, इस तरह का कहना था। तो हम इसीलिए यहाँ वीसी के यहाँ आए थे, वाइस चांसलर के यहाँ पे, ताकि हम पता लगा पाए कि अपडेट क्या है, क्या उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि नहीं। तो हमें खबर मिली है कि जो वीसी है वो आउट ऑफ स्टेशन है, और जो वीसी इंचार्ज है उन्हें हमने कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते एंड वो अभी बिजी है। तो देखना ये होगा कि जब वीसी जो वाइस चांसलर वापस आ जाता है तो हम भी आकर उनसे अपडेट लेंगे, उनसे जानेंगे एग्जैक्टली उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्योंकि जो एसोसिएशन है, जो RGU टीचर्स एसोसिएशन, उनके तरफ से एक काइंड ऑफ लाइक उनकी तरफ से कहा गया है, डिक्लेरेशन कह सकते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर विद इन 3 to 4 डेज, विद इन 4 ऑफ दिस मंथ, यानी कि सितंबर तक अगर डिमांड फुलफिल नहीं किया जाता है तो 5 सितंबर को उनके तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यानी कि यहीं पे उनके तरफ से एक पीसफुल धरना किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उनकी तरफ से डिमांड फुलफिल किया जाता है कि नहीं।